Have you ever wondered what happens to the painkiller you swallow? As in, what on earth your body does to it? No doubt it relieves the headaches you might be having, or pain in your leg, or pain in your whole body. But have this question ever popped into your bright minds? How it goes, where it is supposed to go? Well, it does that by going into your blood. Now, how it reaches there, that, my friend, is pharmacokinetics, and that's how body process it. तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि ये होता कैसे है और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसे हम एक जर्नी के थ्रू देखेंगे, नॉट माइंड, ड्रग्स जर्नी। रेडी? नोट दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर टेकन ओरली। एक ऐसा ड्रग जिसे आपने ओरली इंजेस्ट किया है, this gets absorbed in your stomach and also in your small intestine because of its large surface area. अब ये जो एंट्री है ये पॉसिबल है बिकॉज हमारी ड्रग्स इन टिश्यूज़ के एपिथेलियल सेल्स से पास होते हैं या इनका पास होना ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि जब ड्रग आईवी एडमिनिस्ट्रेड होगी तब ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, एंड दैट इज़ द रीज़न आईवी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 100% बायो अवेलेबिलिटी। वंस एब्जॉर्ब्ड, हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करती है और इसे फिर डिलीवर किया जाता है लीवर को, बिग बॉस को, क्योंकि लीवर ये एक ऐसा ऑर्गन है विच इज़ एनाटॉमिकली लिंक्ड टू ब्लड वेसल्स लिविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and reaches to the organs with high blood flow like heart and brain. अब ये finally distribute होगी to the other distant organs of the body, जहाँ जाकर ये अपना action दिखाएगी। Finally, the drug gets excreted. But wait, before that, the drug needs to be metabolized and biotransformed in order to become a water-soluble residue, जो कि होता है again big boss के घर में, यानी लीवर में। लीवर में इसलिए क्योंकि यहाँ मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी सारे एंजाइम्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। दैट वाज क्वाइट अ राइड। लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स? इट्स अ साइंस which tells us what body does to the drug. Let's move further and break this word. What does it make out to be? Pharmakon and kineticos, meaning a drug in motion. Yeah, literally. So in the previous video we have already discussed in brief कि pharmacokinetics क्या है, ये कैसे होता है. If you haven't watched that, please do. So moving forward, drug का absorption 4 तरीके से होता है. First is passive diffusion, जिसमें drugs simply from area of higher concentration to area of lower concentration से diffuse होते हैं. अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो इट विल पास थ्रू अ गेट और अ पोर, और अगर ये लिपिड सोल्यूबल है तो ये आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल इस हीरो की एंट्री की तरह। इट्स कॉल्ड पैसिव बिकॉज यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर डिफ्यूज्ड दिस वे ओनली। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हियर, as the name suggests, facilitation is done by carrier proteins for large molecules. Next up are active transport, which requires energy, and this energy comes from hydrolysis of ATP to ADP. And the last is endocytosis. Endocytosis absorbs via engulfment by cell membrane. इनके membranes ही इन्हीं को खा जाते हैं because they are so large that they cannot fit into a pore or a channel to pass through passive diffusion or facilitated diffusion. Now let's look at this concept, bioavailability. Quite a mouthful, right? So let me ask you a question now. Say you take 100 mg of medicine. Do you think it reaches its site in one piece? That is, does it reach 100 gram as it is? The answer is no. Why? Because most of it gets metabolized in the liver even before it reaches the systemic circulation. But as we discussed in case of IV administration, note that it is 100% because it bypasses
एक डिटोर जैसे हो जाता है, राइट? लेट्स लुक एट डिस्ट्रीब्यूशन नाउ. So, the process of transferring a drug from the bloodstream to tissues is referred as distribution. अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करते हैं, जैसे कि लिपोफिलिसिटी, देन कम्स ब्लड फ्लो. ऐसे ऑर्गन्स जिनका ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ऐसे टिश्यूज़ जिनका ब्लड फ्लो ज़्यादा है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जैसे कि ब्रेन. और जिनका ब्लड फ्लो कम है वह जैसे कि स्किन. नेक्स्ट अप वी हैव कैपिलरी परमेबिलिटी. ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी ज़्यादा है वो है लिवर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. ऑन द कॉन्ट्ररी ब्रेन हैज़ लोअर कैपिलरी परमेबिलिटी, सो यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा. On the other hand, apart from these three, plasma and tissue binding also important factors that govern the distribution. So many drugs will bind to albumin, जो कि एक important protein है. Now moving forwards, we have covered what is drug distribution. Let's look at what is volume of distribution, because that one is important too. So volume of distribution relates the total amount of drug in the body to the concentration of the drug in the bloodstream. Now let's understand this by one example. Look at this image. What do you understand? Let's infer it. A high molecular drug will have low volume of distribution because it cannot pass through the capillaries. On the contrary, एक लो मॉलिक्यूलर ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा क्योंकि वो टिश्यूज़ में ईजीली पहुंच जाएगा. गॉट इट? लेट्स लुक एट मेटाबॉलिज्म नाउ. सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? इट रेफर्स टू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है टू सस्टेन लाइफ. सो मेटाबॉलिज्म क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है इन द लिविंग कंडीशन ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म. ये मेंटेन करती है बॉडी की लिविंग कंडीशन को. सो मेटाबॉलिज्म दो तरह से होती है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 1 आर कॉल्ड एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, एंड फेज़ 2 इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन रिएक्शन जहाँ पे कॉन्जुगेट बनता है. सो दीज आर कैटेगराइज्ड एज फेज़ 1 एंड फेज़ 2. इन फेज़ 1 oxidation, hydrolysis and reductions are involved, and most of these are catalyzed by cytochrome P450 enzymes. On the other hand, after phase 1 reaction अगर अभी भी ड्रग लिपोफिलिक है तो इसमें पोलर ग्रुप को जोड़ दिया जाएगा थ्रू फेज 2 रिएक्शंस जो होती है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, विच इंक्लूड्स glutathione conjugation, acetylation, sulfate conjugation, glucuronidation, etc. Now at last, excretion. So excretion is done either through kidneys by means of filtration in the form of urine, although कुछ drugs small amount में through feces भी excrete होती हैं. इसके साथ साथ sweating and respiration के ज़रिए भी drugs excrete out हो सकती है. Now when we talk about excretion, kinetics को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. So there are two types, first order kinetics and zero order kinetics. In first order kinetics, see, it is very easy to remember these. In first order, the amount eliminated is different, but the fraction that is getting eliminated will be constant over the time. On the contrary, in zero order reaction, the rate of elimination is constant. Amount is same, but the fraction that is getting eliminated will be different, and when we plot a graph for first and zero order reactions, it will appear like this. Moving forward, let's look at steady state. So have you ever heard balanced life is a healthy life? Not too much, no too little, right? That's what steady state is about. Why we are interested in it? Because the concentration of drug should be high enough to be effective, but not too high to be toxic. There you go. That's steady state. That's it for today, guys. Hope you like the video. Please like, comment and subscribe.